Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back again in your English class. I'm your English teacher Rabia Batul. Yes students, we were at the chapter number 1, responsibilities of youth, and inshallah today we will complete this lesson. In the previous 2 lectures you have learned that Quaid-e-Azam has delivered that convocation address to the youth, and Quaid-e-Azam is focusing on the importance of studies. As I have told you in the previous lecture as well, that Quaid-e-Azam has said that students should focus first, the foremost priority, they should focus on studies. And secondly, Quaid-e-Azam also advised youth to be constantly vigilant and watchful. And third, Quaid-e-Azam also told us about some important facts and points that we should be careful that how we are there to judge about the fifth columnist and selfish people, and how we are there to support and help out the sincere persons, sincere people which are helpful for our state. Yes students, today we have to continue from page number 4. There is another matter that I would like to refer to. Yes students, आपको पता है बेटा पीछे भी Quaid-e-Azam ने मुख्तलिफ हवाले मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिए, तो यहाँ पे Quaid-e-Azam बात करें कि मैं एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहूँगा. My young friends, Quaid-e-Azam is addressing the youth by saying young friends. Hitherto, have you heard the term hitherto? Yes students, hitherto means till now. Hitherto means till now, ab tak, yani present time tak. Yes students, Quaid-e-Azam is saying that my young friends, hitherto you have been following the rut. Yes, what is the word rut means? A habit or pattern of behavior. बेटा वो आदत जो आप constantly follow कर रहे हैं और that is not producing, you can say that any productive result or any productive consequence. So that habit that is being followed as considered as a trend, एक रवाज बन जाता है, जो एक ट्रेंड बन जाता है, उसको बोलते हैं रट. Quaid-e-Azam is saying that कि अब तक आप जो वो हैबिट, जो रवाज, जो पैटर्न जो फॉलो कर रहे हो, that my young friends, hitherto you have been following the habit, the same habit, कि जो इतने अरसे से एक पुरानी रवाज चल रहा है, एक रवायत चल रही है, एक हैबिट जो है वही आप उसको फॉलो कर रहे हो, सेम पैटर्न पर आप चल रहे हो. अब उस आदत को तब्दील करना है, अब हमने उस ओल्ड पैटर्न को, उस ओल्ड हैबिट को चेंज करना है. You get your degrees and when you are thrown out of this university in thousands. जी, Quaid-e-Azam has addressed that. He said that कि अब आप सब ने आज, as you had learned in the first lecture, that Quaid-e-Azam at the very start congratulated students on getting degrees and diplomas. So same is the case over here. Quaid-e-Azam is saying that now you have completed your degrees, your diplomas. तो इस पे Quaid-e-Azam कह रहे हैं कि अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या सोच होगी? व्हाट इज़ द एम दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड आफ्टर अचीविंग दैट सक्सेस, दैट गोल, दैट डिग्री, दैट डिप्लोमा? What is there in your mind and for which thing you are hankering for? Hanker. Yes words. Yes students. The word hanker means strong desire. Hanker means having or a strong desire. बहुत ज़्यादा शदीद जिस चीज़ की आप तलब रखते हैं. Quaid-e-Azam addressed the youth by saying that young friends, after completing your degrees, after completing your diplomas, after passing through from that going through from the university, when you are entering in your practical life, you people are having a strong desire for what? For the government service. आप सब जो स्टूडेंट्स थाउजेंड्स की तादाद में जो आज यहाँ यूनिवर्सिटी से
क्लियर होके जा रहे हैं अपनी डिग्रीज और डिप्लोमाज लेके, तो आप सब स्टूडेंट्स में एक ही स्ट्रॉन्ग विश और डिज़ायर होती है, आपके माइंड में एक ही सोच आती है कि आप सब के सब को गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट सर्विस आप हासिल कर लें। एंड दिस इज़ द रट, यानी ये वो ओल्ड हैबिट है, ये वो पैटर्न है जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, जिसकी सब डिज़ायर, जिसकी सब विश रखते हैं। As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing, जी आप कायदे-आज़म said that कि आपके वाइस चांसलर ने बहुत अच्छे तरीके से ये बयान किया है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ये जो आपके पास ओल्ड एजुकेशनल सिस्टम है, इसका मेन ऑब्जेक्ट, और जो ये गवर्नमेंट जो कि अब तक एग्जिस्ट कर रही है, इस गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, was really to have well trained and well equipped clerks. Yes students, as they all are following the old pattern, so the main object of that old educational system and the main object of the government is to produce just a prepared, well equipped, well developed clerks, not more than that. कि वो स्टूडेंट सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लेकर, गवर्नमेंट सर्विस लेकर अच्छे तैयार शुदा अच्छे लेवल के, बस एक क्लर्क की लेवल तक की वो डिज़ायर रखते हैं और क्लर्क तक के लेवल को हासिल करना चाहते हैं। और यही मेन ऑब्जेक्ट है। हमारा जो ओल्ड एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो क्लर्क्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन व्हाट कायदे-आज़म हैज सेड, ऑफ कोर्स some of them went higher and found their level. ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने उसमें प्रोग्रेस शो की है और वो हायर लेवल तक तरक्की करके पहुँचे हैं और उन्होंने अपना एम, अपना एम्बिशन, अपने उस लेवल को अचीव किया है। बट द होल आइडिया वॉज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स। लेकिन बेटा बात तो वहीं पे है, मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो एक मकसद है वो तो सिर्फ वहीं क्लर्क्स तक ही रही ना। Mean they are not getting more progressive and progress and development. They are not getting any progress stage. They are not getting any, you can say that, versatile degree or progress in their life. They are just having limited source till a qualified clerk. So that's why Qaid-e-Azam is saying civil service was mainly staffed by the Britain and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Yes students, सिविल सर्विस भी उस वक्त इंट्रोड्यूस कराई ब्रिटेन ने और इंडियन एलिमेंट यानी इंडियन जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था जो सब, उसमें इंडियन के हाई पोस्ट पे अच्छे लेवल पे कुछ लोग उन्होंने अपनी पोस्ट ली और ये सिविल सर्विस ये जो प्रोसीजर था ये सब बहुत इसने तरक्की भी की, प्रोग्रेस भी शो की। वेल द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मेंटालिटी। लेकिन इन सब बातों से कायदे-आज़म क्या बयान क्या करना चाह रहे हैं कि हमने अपनी उस मेंटालिटी को, उस जहनीत को, उस नुक्ता नज़र, यू कैन से दैट थिंकिंग एंगल को हमने चेंज करना है, साइकोलॉजी, अपनी साइकी को चेंज करना है। एंड अ स्टेट ऑफ माइंड दैट एन एवरेज मैन when he passed his BA or MA was to look for some job in government. Yes students, क्या बेटा वो मेंटेलिटी है, क्या साइकी है कि वो ओल्ड एजुकेशनल सिस्टम और जो उस वक्त ये सारे स्टूडेंट्स थे, अगर कोई भी बंदा BA कर लेता है, MA कर लेता है, द सेम साइकी, द सेम मेंटेलिटी दैट ही और शी वुड गेट अ जॉब इन द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, और वो जॉब BA या MBA करने के, MA करने के बाद क्या जॉब उसके पास अवेलेबल है, एक क्लर्क की गवर्नमेंट जॉब, और वो किस लेवल की है कि if he had it, he thought he had reached his height. और बेटा क्या उनकी मेंटालिटी, क्या साइकी है कि अगर उसको BA या MA के बाद जॉब मिल गई, गवर्नमेंट सरकारी जॉब मिल गई, गवर्नमेंट सर्विस, if he has achieved after BA or MA, so he thought that he has achieved each and everything in his life, कि वो उस मकसद तक, उस हाइट तक, उस लेवल तक, उस एम तक पहुंच चुका है। मीन्स दैट एट दैट टाइम स्टूडेंट्स आर हैविंग, students who have passed their degrees, they are just having the scope
the level of getting a government service. I know, and you all know what has been really the result of this. और मैं भी, आप सब भी बहुत अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि इसका क्या नतीजा निकला है. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver. Yes, कायदे आज़म ने कितना रियलिटी में ये बात बयान कर दी है कि हमारे तजर्बे और आपके तजर्बे ने ये बात बयान कर ली है कि एक MA पास स्टूडेंट कितना अर्न कर लेता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को सर्व करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. क्या वो अर्न कर लेता है कि जितना एक टैक्सी ड्राइवर भी नहीं. टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा अच्छा इनकम हासिल कर लेता है, कमा लेता है बनिस्बत के एक MA पास गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट के. And most of the so-called government service are living in a more miserable manner. And what harsh reality कायदे-आज़म has displayed कि वो गवर्नमेंट सर्विस, वो मुलाजमीन जिनको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है, वो बहुत ही मिजरेबल स्टेट मीन्स उनके बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही बुरे हालात में, स्ट्रेसेबल वे में, बुरे हालात में वो अपना वक्त गुजारे, मुश्किल से वो अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं. That then many menial servants who are employed by well-to-do people, बनिस्बत के उन लोगों के, यानी एक तरफ गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक तरफ वो नॉर्मल पर्सन जिसके पास मेनियल सर्वेंट बोलते हैं बेटे, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, अनस्किल्ड पर्सन. आई हैव ऑल्सो रिटन ओवर हियर मेनियल एंड अनस्किल्ड पर्सन who is not having any skills, who is not showing any you can say that particular skills in any kind of field. तो एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई स्पेसिफिक हुनर नहीं है लेकिन वो सिर्फ एक अच्छे अमीर तबके के अच्छे लोग किसी बंदे के पास काम करके उसकी मुलाजमत पे वो अच्छा इनकम हासिल कर लेता है, वो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं एक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ. कायदे-आज़म हैज सेड कि एक नॉर्मल अनस्किल्ड पर्सन किसी आम बंदे के पास, एक नॉर्मल हाई लेवल बंदे के पास सर्व करके, मुलाजमत करके, मेहनत मजदूरी करके ज़्यादा अच्छा कमा लेता है बनिस्बत के एक गवर्नमेंट सर्वेंट के. नाउ आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप. यस, दिस ऑल डिस्क्रिप्शन वॉज जस्ट टू मेक यू पीपल रियलाइज. कायदे-आज़म has described each and every fact just to realize the youth that you have to change your mindset, this old behavior, this old mindset. Now we are free, we are independent sovereign state, we have got independent Pakistan, so we have to change our mindset, we have to change this old pattern and that mentality. और ना सिर्फ ये पैटर्न बल्कि हमने अपनी जहनीत को भी चेंज करना है. And especially now that we are in free Pakistan, and especially just because of this reason that we are now in own separate homeland, we have achieved freedom, so we have think positively in a different manner. Government cannot absorb 1,000, impossible. देखिए बेटा, गवर्नमेंट cannot absorb 1,000. कायदे-आज़म has said कि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हर साल इस डिग्रीज और डिप्लोमाज लेकर पास आउट होते हैं और ये कामयाब होकर निकलते हैं, तो क्या गवर्नमेंट तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड कर सकता है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं गवर्नमेंट के पास कि वो हर साल इतने पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को जॉब की फैसिलिटी दे सके. सो व्हाट कायदे-आज़म हैज़ क्लियरली सेड, पॉज लिया और पॉज के बाद इम्पॉसिबल. As you know this thing, nothing is impossible, but the Qaid-e-Azam has used this term impossible just to make you people realize, just to give the stress. इस फोकस स्ट्रेस की वजह से कि बेटा गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सके. बट in the competition to get government service, most of you will be demoralized.
Yes, definitely students, when you want to get something, you are having an aim in your mind. Quaid has stated it previously that all students are having this mindset that they will get job after BA or MA. But when they are unable to achieve that target, when they are not having that government job, then what will happen? The result, कैसा result आता है उसका? बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस कि जब इस मुकाबले में वो कामयाब नहीं हो पाते, मोस्ट ऑफ यू विल बी डीमोरलाइज्ड मीन्स उनके मॉरल वैल्यूज डिग्रेड होते हैं. दे आर लूजिंग देयर होप्स आफ्टर नॉट गेटिंग गवर्नमेंट सर्विस बिकॉज दे हैव अ ग्रेट यू कैन से दैट माइंड सेट एंड हायर होप्स दैट वी विल गेट government service after receiving our degrees and diplomas, but when they are not able to get that degree, that service, government service, then they are totally lost. They lost all their hopes. They are demoralized. Government can take only a certain number. Definitely students, you all know this thing. जाहिर है बेटा, जो भी फर्म, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी चाहे इवन हम ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें, एक लिमिटेड लोगों को ही वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्रोच कर सकती है. गवर्नमेंट लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही फैसिलिटेट कर सकती है एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स. और वो बाकी स्टूडेंट्स, वो बाकी जो यूथ, वो लोग जिनके पास ये आला उम्मीदें, उन्होंने एक हायर एम बनाया होता है कि उनको सर्विस मिलेगी गवर्नमेंट की, लेकिन अगर वो जॉब नहीं हासिल कर पाते तो उनके साथ क्या होता है, वो कहीं भी सेटल डाउन नहीं हो सकते. They are, you can say that they are just feeling that they have lost each and everything in their life. They have become hopeless for each and every case, that they have nothing in their life. So that's why they can't be settled down in any phase of life. And being disgruntled. Yes students, have you heard this term, disgruntled? A very common term, and I think so you should be familiar about it. Disgruntled means dissatisfied. Dissatisfied. Common nature of man that all the time you can say that saying this is not good, this is not good. हर वक्त आपने देखा होगा बेटा, ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज़ में, किसी भी हालत में मुतमईन कम ही होते हैं. तो disgruntled, dissatisfied. जब वो स्टूडेंट्स जिनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती और उन्होंने इतनी हाई होप्स लगाए होते हैं, जब वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते तो वो कहीं पे भी सेटल डाउन नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो डिससेटिस्फाइंग स्टेट में होते हैं, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं and are always ready to be exploited by persons who have their own axe to grind. An axe to grind, it's an idiom. इडियोमैटिक फ्रेज है ये बेटा, और इस इडियम का क्या मतलब है? हैविंग अ सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग. इट्स एन इडियम बीइंग यूज्ड ओवर हियर. हैविंग अ सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग. बेटा अपना फायदा निकालना, अपने मफाद के लिए सोचना, that you are just having concern for your own benefit and you are using for your own benefit to any other person. You are using, you can say that illegally or wrong, by any wrong mean, any other person for your own benefit. You are just thinking for your own betterment. Okay? तो वो स्टूडेंट्स, वो यूथ जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती और वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, और मुख्तलिफ बहुत से लोग ऐसे हैं आपकी सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपका अननेसेसरी यूज़ करते हैं और वो अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपका गलत इस्तेमाल करके सोसाइटी को, स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए. नाउ आई वॉन्ट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, your attention, your aims and ambitions to other channel and the other avenues and fields. Yes, Quaid has stressed that now we are free, we are independent, we have to change that old pattern. So we have first of all change our mind. हमने अपनी जहनियत को, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना है. Your attention यानी अपनी तवज्जो को तब्दील करना है. योर एम्स एंड एम्बिशंस, जो हमारे इतनी होप्स, इतने हाई एम्स और एम्बिशंस जो हमने लगाए हैं, उनको चेंज करना है टू अदर चैनल्स एंड द अदर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स.
और उनको कन्वर्ट करके, डाइवर्ट करके, चेंज करके, शिफ्ट करके हमने दूसरे बहुत से शोबों की तरफ, रास्तों की तरफ, एवेन्यूज़, बहुत से फील्ड्स की तरफ, रास्तों की तरफ, शोबों की तरफ हमने डाइवर्ट करनी है अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी को, दैट आर ओपन टू यू। वो वाली फील्ड्स, वो वाले एवेन्यूज़, वो वाले प्रोफेशंस जो हमारे लिए ओपन हैं, ओपन चॉइस है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा उसमें आपके पास डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का उसमें चॉइस भी है। तो उन शोबों की तरफ, उन फील्ड्स की तरफ हमने अपना रुझान बढ़ाना है। देन ओपन टू यू एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो। और कायदे-ए-आज़म सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो हमारे लिए ऐसी बहुत सी चॉइसेस मौजूद हैं, और वाकई ही उसमें आपके लिए दिन ब दिन डेवलपमेंट है, तरक्की है। और अगर हम उन प्रोफेशंस को, उन फील्ड्स को, उन रास्तों को अपनाएंगे तो हम उसमें पॉजिटिवली तरक्की करेंगे, हम उसमें प्रोग्रेस शो करेंगे। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर। हाउ ब्यूटिफुली कायदे-ए-आज़म हैज़ डिस्क्राइब अबाउट हार्ड वर्क, कि बेटा हमने इस चीज़ में हेजिटेशन फील नहीं करनी कि हमने मैनुअल वर्क के हाथ से मेहनत करने वाला काम, हमने मजदूरी में हाथ से मेहनत मजदूरी करने वाला काम, किसी भी तरह के इस तरह के हार्ड वर्क में हमने कोई शेम, कोई शर्मिंदगी, कोई शर्म महसूस नहीं करनी। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप in technical education, for we want technically qualified people very badly. Yes students, as you know this thing that this is a newborn state, we have just now got the independent sovereign state, so we want technical peoples, technically skilled people. So what Quaid-e-Azam had said that all people should be technically qualified, they should get technical education and they should choose technical fields, because our government, our state is having strong desire, is having strong need of those technical professional students and you can say that skilled persons, कि अगर हमारी सियासत में टेक्निकली एजुकेटेड लोग आ जाएं तो ये हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत अशद एक जो स्ट्रॉन्ग ज़रूरत की चीज़ है। वेरी बैडली, पीपल वेरी बैडली, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। इस चीज़ को हमने फुलफ़िल करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेटेड पीपल प्रोड्यूस करने हैं। यू कैन लर्न बैंकिंग, बेटा हम बैंकिंग की फील्ड की तरफ जा सकते हैं, कॉमर्स की तरफ, ट्रेड, लॉ एक्सेट्रा, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कायदे-ए-आज़म ने हमें पॉइंट आउट किए हैं कि हम इन सब रास्तों की तरफ भी अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं, विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, जिसका आज अब बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मौके हमें मिल सकते हैं इन फील्ड्स को ज्वाइन करने के बाद। Already you find that new industries are being started and definitely you know this thing that कायदे-ए-आज़म ने पहले भी बयान किया कि जैसे हमने अभी सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट हासिल की है तो नई नई इंडस्ट्रीज़ भी स्टार्ट हुई हैं, न्यू बैंक्स बने हैं, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज़ की बनाई गई हैं, न्यू कमर्शियल फर्म्स प्रोड्यूस की गए हैं, आर ओपनिंग एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन। ये तमाम डिफरेंट फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स एंड कॉमर्स ट्रेड एंड ऑल दीज कमर्शियल फर्म्स, ऑल दीज थिंग्स हैव प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें ओपन की गई हैं फॉर विच पर्पज़, टू गेट डेवलपमेंट, टू गिव यू पीपल प्रोग्रेस। Think of them and divert your attention to them. Quaid-e-Azam has again stressed that you people have to think about these fields, these channels, these ways. You have to think about these opportunities and you have to give attention and focus to these fields of life, and believe me, you will there benefit yourself more than by merely going in for government service. And Quaid-e-Azam has also given the surety, Quaid-e-Azam has affirmed this thing in his address that dear youth, if you people will join such professions and fields, then you will positively and definitely achieve, you can say that, positive progress, higher level progress, development in your life. आपको एक गवर्नमेंट सर्विस, एक गवर्नमेंट जॉब की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा अच्छी
ज़्यादा अच्छी डेवलप और प्रोग्रेस करने का, तरक्की करने का, ज़्यादा आगे निकलने के मौके मिलेंगे। एंड रिमेनिंग देयर, और वहीं पर गवर्नमेंट सर्विस में रहना, उसको हासिल करना, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल साबित नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप एक नॉर्मल किसी भी इन फील्ड्स में से किसी फील्ड को ज्वाइन करें। In what I should say, a circle of clerkship working there for morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. What Qaid-e-Azam is saying कि बेटा आपका ये जो सर्कल है यूथ, आप एक गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हो, एक क्लर्क की लेवल पे क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से रात तक शाम तक आप जो ये जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपके पास क्या है, उस क्लर्कशिप के उस दायरे में रहते हुए उसी लिमिटेड एटमॉस्फेयर में आप क्या कर लोगे कि इन मोस्ट डिंजी एंड अनकंफर्टेबल कंडीशन, डिंजी यस, ग्लूमी, डार्क, ग्लूमी, जो इस तरह का एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप कितना इस तरह के अनकंफर्टेबल कंडीशंस में आप कितना प्रोग्रेस कर लोगे, कितना सीख लोगे, कितना डेवलप, तो उस एटमॉस्फेयर का आप पे बहुत असर पड़ता है, उस सिनेरियो का, उस एनवायरनमेंट का। You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourself but also your state. Yes, what Qaid-e-Azam has said कि बेटा आप अगर you will be far more happy, अगर एक गवर्नमेंट जॉब के अलावा आप इन फील्ड्स में से, इन ट्रेड्स में से किसी को भी ज्वाइन कर लेते हो, अप्लाई कर लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक गवर्नमेंट मुलाजिम होने की निस्बत एक इस फील्ड में आकर बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे एंड फॉर मोर प्रॉस्पेरस, और इससे बहुत ज़्यादा आप खुशहाल भी होंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा मौके, अपॉर्चुनिटीज़ होंगे आपकी लाइफ में कि आप अपने आप को कॉमर्स और इंडस्ट्री और इस तरह की फील्ड्स में आकर बहुत आगे तक, बहुत ऊपर तक ले जा सकें, और जिसकी मदद से after selecting and choosing these trades, you will not only prosperous and happy just for your own sake, but also you will help out your country, your state, your environment, your society as well. सिर्फ आपकी ज़ात को इससे फ़ायदा नहीं है, आपकी पूरी स्टेट को आपकी इस जॉब, इस इंडस्ट्री, इस कॉमर्स, इस उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने से, इस वे पर चलने से आपकी पूरी स्टेट को फ़ायदा मिलेगा। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, यस इंस्टेंस, एग्जाम्पल। कायद-ए-आज़म यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करें ताकि स्टूडेंट्स इस चीज़ को ईजीली ऑब्जॉर्व कर लें, एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज बेटा जो एक ट्रेंड बना होता है ना उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये तो एक कॉमन सी बात है कि आप अगर अपनी एग्जाम्पल भी ले लें, हमारी सोसाइटी में भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और ये सब क्या एक साइकी बनी होती है, हमने किस फील्ड में जाना है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, टॉप मोस्ट हम प्रायोरिटीज़ इनको दे रहे होते हैं। नो, दिस इज़ नॉट द केस। डोंट थिंक अबाउट इट कि हम किस फील्ड में हैं, किस सब्जेक्ट में हैं, जस्ट यू शुड बी परफेक्ट वट एवर यू आर डूइंग। Your choice, your subjects doesn't matter. The way how you are doing that thing, the way how you are getting that degree, how much perfect you are in your, you can say that field, that matters a lot. Okay dear students, so you should not have that old pattern in your mind. आपकी thinking, आपका behavior वो नहीं होना चाहिए. You should think positively and with change attitude. How? Qaid-e-Azam has also described an example over here. I know a young man. Qaid-e-Azam ये बयान करें कि मैं ज़ाती तौर पर एक ऐसे बंदे को जानता हूँ who was in government service, जो कि गवर्नमेंट का मुलाजिम था। 4 years ago he went into a banking corporation. 4 साल पहले उसने बैंक को ज्वाइन किया और वो बैंकिंग की जॉब के लिए आया। ऑन 200 रुपीज़, 200 पर मंथ उसकी सैलरी थी। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग। क्यों? क्योंकि उसने बैंकिंग से रेलिवेंट सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े हुए थे। एंड टुडे ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स, और आज वो उन्हीं की जो डिफरेंट फर्म्स वगैरह उनमें से एक फर्म में मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़ अ मंथ। और एक मंथ में वो कितना कमा लेता है? 1500। स्टार्ट उसने लिया 4 years बिफोर
200 रुपीज़ से, और अब उसकी इनकम इंक्रीज होकर पर मंथ 1500 विद इन 4 ईयर्स, जस्ट 4 ईयर के अंदर क्या चेंज आया, 1500 का। These मीन 200 से वो टोटली 1500 पे पहुंच गया। These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. जी बेटा, यही तो वो मौके हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में कायदे आज़म क्या कह रहे हैं, आई डू इम्प्रेस अपॉन यू। इम्प्रेस अपॉन यू, yes students, what I have written over here, impress upon, to make someone understand. Impress upon, to make someone understand. Qaid Azam want to make youth to understand this thing, that these all opportunities are just for you people. You have to understand this thing, that now your mind, your thinking, your mentality should be changed. You are in free state, you should think positively and in a different manner as compared to the students who are passing out from universities and still they are not independent and free. Yes students, our chapter is complete over here. So overall मैं end पे बेटा आपको थोड़ा सा summarize कर लेती हूँ. Basically this chapter, the unit number 1, these are the excerpts from the convocation address delivered at the Dhaka University. जो आपका ये यूनिवर्सिटी में कायदे आज़म को कहा गया कि उन्होंने वो एड्रेस पेश करना है. So what कायदे आज़म has delivered in that address, first of all he congratulated the students who had completed their degrees, their diplomas, and then Qaid Azam has stressed a lot about the constantly vigilant behavior of the youth. Qaid Azam stressed that all each and every person, especially youth, should be watchful, be aware and vigilant about those people who are not sincere with them. And third, Qaid Azam said, told us different points how we are there to point out those people who are not sincere with us, with our state, with our country, and don't want to give us benefit. They are just harmful for us. We have to point out those people. And at the last, Qaid Azam also focused on the importance of studies. Qaid Azam said that the foremost priority of a student is to get good education, because that education is the only way to make you strong. That is a strength for yourself, for your country, for your state. That is very important to, after achieving good education, you are able to fight with your practical life. You are able to face the hardships and difficulties of your practical life. And in today's lecture, we have discussed that how Qaid Azam has described different instances and how Qaid Azam has given the importance of different careers. Qaid Azam has stressed that we have to choose different careers where our thinking and mentality is just not limited to the government service. As the old students, the students which are who are clearing their degrees and who are passing out from the universities, but they are not having that independent state, so they are limited in their goals. But now Qaid Azam focused this thing that we are free, our youth who are now cleared their who have achieved their degrees, now they are in the free independent state, so they should choose different careers and they have a lot of opportunities in all these different professions. So dear students, this is all about the responsibilities of youth. I hope so you have also cleared about your own responsibilities and this chapter is clear to all of you. Inshallah, if you have any problem, then we will discuss in the Curie class. Allah Hafiz.